Jai India students, I'm your science teacher Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study the chapter Our Environment. It's a very small chapter, yet it's a gift for you all क्योंकि 5 मार्क्स के लिए एक छोटा सा चैप्टर है. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो you can easily gain that 5 marks in your exams. So without any delay, let's start with our chapter Our Environment. What is our environment? Our environment is the things that is included everything around us. That will include the plants, animals, the soil, rain, water, everything around us. It's known as our environment. Environment का एक छोटा component होता है ecosystem. So हम बात करेंगे ecosystem के बारे में. Ecosystem is a smaller component of environment and this ecosystem could be of two types. So let's discuss about the types of ecosystem. Ecosystem could be either natural or man-made. Man-made is also known as artificial ecosystem. So natural ecosystem includes forests, rivers, ponds, lakes. These all comes under natural ecosystem. जिसमें human beings के intervention की ज़रूरत नहीं है, self-sustained है, वो अपने आप अपनी activities carry out करेंगे and the organisms will be surviving on their own. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन होता है एंड द एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स गार्डन, क्रॉप फील्ड, aquarium and zoo. So all these forms a artificial ecosystem. Then comes the components of ecosystem. Components का मतलब होता है उसके parts. एक ecosystem में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, that is all the components of ecosystem. So components of ecosystem includes the biotic components and abiotic components. Biotic components. Biotic components includes all the organisms in any ecosystem. So that will include the plants, animals, as well as the microorganisms, that is the decomposers. So all the organisms that are there in any ecosystem that are known as biotic components. Then the abiotic components. Abiotic components includes the air, water, sunlight, humidity, rainfall, soil. All these are known as abiotic components. तो किसी भी ecosystem में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट्स को सर्वाइव करने में जो हेल्प करेंगे दैट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ लेट्स डिस्कस अ बिट मोर अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. Producers includes all the green plants and some bacteria that can produce the food on their own. तो उन सबको कहेंगे हम producers. Then comes the consumers. Consumers will include the herbivores, carnivores, omnivores, parasites. तो ये सारे organisms consumers में included होते हैं. And the third category of organisms is decomposers, which is very important for environment as well as for your exams also. Exams में बहुत frequently पूछते हैं आपको what is the importance or role of decomposers in any ecosystem. So decomposers are very important for ecosystem because if decomposers are not there, then the earth would have been surrounded by dead bodies all around us. Just imagine the situation. हमारे चारों तरफ बहुत सारी dead bodies होती अगर decomposers नहीं होते. But thanks to the decomposers which decompose the dead and decaying matter and send the nutrients back to the soil. So the second importance of decomposers is that they send the nutrients back to the soil, जिसकी वजह से soil fertility भी maintain रहती है. So these are the 3 categories of biotic components. Next, let's see what is food chain and food web. This is also an important topic for your exams. Food chain. Food chain is a series of organisms. It's a series that shows one organism is eaten up by another and that in turn is eaten up by some other organism. For example, in a forest, we see a forest food chain that comprises of plants that are being eaten up by deer. Deer is in turn eaten up by the tiger or lion. So, this chain of organisms is known as a food chain. One more example of a food chain that occurs in grassland is grass is eaten up by grasshopper and other insects. These insects are in turn eaten by a frog.
This frog is in turn eaten up by a snake, and that is eaten up by an eagle or vulture. So this chain of organisms which show one organism is eaten up by another organism is known as a food chain. One more last example of a food chain in a pond is the aquatic plants are eaten up by aquatic insects like crab, that in turn is eaten up by small fishes, and these fishes in turn are eaten up by cranes, swan, ducks, though these birds are going to eat up these fishes. So that is an example of a food chain in a pond. These three food chain are also given in NCERT, so they are sometimes asked for 1 marks that write a food chain in a grassland or in a pond or in a forest. Now, कभी भी आप नेचुरली अगर एनवायरनमेंट में देखोगे तो एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंडेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक एक फ्रॉग को भी खा सकता है या फिर एक रैट को भी खाता है, तो उसके फूड के लिए उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. Similarly, a snake in turn is eaten up by a eagle, vulture, it could be eaten up by a peacock. तो various food chains जो होती हैं, they are interconnected with each other. And this interlinking of the various food chains is only known as food web. So food web comprises of various food chains which are interlinked to each other. मतलब different food chains एक दूसरे से connected होती हैं. एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग फूड चेन्स का पार्ट हो सकता है, एंड दैट इज ओनली नोन एज अ फूड वेब. नाउ अगर हम फूड चेन की ही बात करें तो सबसे पहले किसी भी फूड चेन में आते हैं प्रोड्यूसर्स. Then comes usually the herbivores that are the primary consumers. Primary consumers like herbivores को खाते हैं फिर secondary consumers that in turn are eaten up by tertiary consumers. तो ये जो different levels हैं इन्हें ही हम कहते हैं different trophic levels also. So the plants will be forming, that is the producers will be forming the first trophic level. Then the primary consumers forms the second trophic level. The third trophic level is formed by the secondary consumers, and secondary consumers are eaten up by the tertiary consumers, that forms the fourth trophic level. So अलग अलग levels हैं organisms के, and these are also known as trophic levels. किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हो तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ये सोचने के लिए जस्ट इमेजिन सिचुएशन दैट यू विजिट अ जंगल. तो सबसे ज्यादा आपको जंगल में जाते से ही फॉरेस्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? दैट वुड बी द प्लांट्स, ट्रीज दैट आर द मैक्सिमम इन नंबर. तो किसी भी इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर होता है दैट इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स. देन आपको डियर देखने को मिल जाएंगे, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनका नंबर ट्री से कंपैरिजन में कम होगा, बट स्टिल दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. और उसके बाद आपको टर्शरी कंज्यूमर्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे. सो यू वुड बी रेयरली एबल टू सी अ टाइगर इन अ जंगल, हार्डली यू वुड बी एबल टू सी अ टाइगर इन अ जंगल. तो दैट टॉप लेवल्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट विल द लीस्ट नंबर इन एन इकोसिस्टम. और इसी को अगर हम एक शेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अ पिरामिड शेप. तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल को शो करता हुआ डायग्राम का शेप क्या है, तो दैट इज अ पिरामिड शेप, जिसमें बेस मतलब प्रोड्यूसर्स दैट इज मैक्सिमम इन नंबर, एंड द टिप दैट इज द टर्शरी और द टॉप कार्निवोर्स दैट इज लीस्ट इन नंबर. So this is the shape of the pyramid of trophic levels. Next, we will talk about the flow of energy in an ecosystem. This topic that we are going to discuss now, it's very, very important for your exams. It's a very frequently asked question in exams that explain about the flow of energy in an ecosystem. Okay, so flow of energy in ecosystem follows 2 points. It has 2 points. First point is that it is always a unidirectional flow of energy. Energy हमेशा producers से primary consumers, then to the secondary consumers, and then it goes to the tertiary consumers. कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर्स से एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में नहीं आएगी. डियर की एनर्जी वापस प्लांट्स में कभी नहीं जाती. तो इसलिए ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑलवेज ओनली यूनी डायरेक्शनल. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो प्लांट्स के ऊपर अगर सनलाइट फॉल होती है तो दैट उस सन एनर्जी, उस सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% प्लांट्स कंज्यूम कर पाते हैं, एंड दैट कन्वर्ट्स टू इट्स बॉडी मास. जब कोई हर्बीवोर किसी प्लांट को कंज्यूम करता है तो प्लांट में से सिर्फ 10% एनर्जी
is taken up by that herbivore. 90% एनर्जी उसकी लॉस्ट हो जाती है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, इन सब में यूज अप हो जाएगी 90% एनर्जी। और सिर्फ 10% एनर्जी ही उसका बॉडी मास बनाएगी एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी जाएगी? जस्ट 10% ऑफ द एनर्जी। इसी तरह से प्राइमरी कंज्यूमर्स में से एनर्जी 10% ही सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंच पाती है और इसी लॉ को बोलते हैं 10% फ्लो ऑफ एनर्जी लॉ। मीन्स जो एनर्जी है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पर, दैट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी दैट विल बी मूविंग अप टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। किसी भी हायर ट्रॉफिक लेवल तक कितनी एनर्जी जाएगी? दैट इज जस्ट द 10% ऑफ द टोटल एनर्जी। और इसलिए ही एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम्स में, दैट एक्सप्लेन व्हाई एवरी फूड चेन हैज जस्ट 3 or 4 ट्रॉफिक लेवल्स ओनली। एट द मोस्ट किसी भी फूड चेन में 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को, एंड ऐसे पूरा फूड चेन 15 ऑर्गेनिजम्स से कंप्राइज कर रहा है। दैट इज नेवर सो। 4, 5 या मैक्सिमम 6 ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी फूड चेन में। सो यू आर आस्क्ड व्हाई इज इट सो? क्योंकि आप देख रहे हो 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल है। तो अगर फूड चेन बहुत लंबी हुई तो हमारे टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होगी दैट वुड बी वेरी वेरी लेस। एंड फॉर दैट पर्पस एवरी फूड चेन इज जस्ट हैविंग 5 or 6 लेवल्स एट द मोस्ट। तो किसी भी फूड चेन को आप देखोगे उसमें 3 to 4 लेवल्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल्स तक होते हैं। बिकॉज 10% एनर्जी फ्लो की वजह से जो हायर लेवल तक एनर्जी पहुंचती है दैट इज वेरी वेरी लेस। Okay, so that is another very important question for your exams, that why every food chain comprises of just 3 or 4 trophic levels only. Okay, so from this topic 3 probable questions are there. First is the explain the flow of energy in ecosystem. Second is the explain the 10% law of flow of energy in ecosystem, and the third one is why any food chain comprises of just 3 or 4 trophic levels only. Okay, so that is about the flow of energy in ecosystem. Next we'll be talking about biological magnification. That is yet another very important question for your exams. We use pesticides, fertilizers and chemicals like DDT on our crops to protect them from insects and pests, and to increase the crop yield we use fertilizers also. But all these chemicals are non biodegradable and they enter our food chain. जब क्रॉप्स के ऊपर हम इनसे स्प्रे करते हैं, इन केमिकल्स को यूज करते हैं, तो ये क्रॉप्स के अंदर अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड व्हेन दे एंटर इनटू द प्लांट्स दे आर देयर इन आवर फूड ग्रेन्स आल्सो। ये पानी के साथ वॉश ऑफ करके वाटर बॉडीज में भी पहुंच जाते हैं, एंड देन दे एंटर द फूड चेन ऑफ aquatic organisms also, and that is why these chemicals are present in the fishes and other aquatic organisms also. So somehow they reach our food chain, they enter our food chain. But what happens then? एक बार ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाए, फिर जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे आप मूव करोगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, दैट गेट्स मैग्नीफाइड। क्यों मैग्निफिकेशन हो रहा है, क्यों इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अगर ये ग्रेन्स के अंदर हैं, सपोज उन ग्रेन्स को कोई हैन कंज्यूम कर रही है, तो उन सारे ग्रेन्स जो पूरी लाइफ टाइम में वो हैन खाएगी, उन सब में अगर पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो जितना भी अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स है दैट विल ऑल गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ दैट हैन। अब ऐसी हैन को जब कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा, तो उस पूरी लाइफ के टाइम पर, पूरी लाइफ टाइम में जितने भी ग्रेन्स खाए, उसमें जितना भी पेस्टिसाइड है दैट ऑल विल गो इनटू द बॉडी ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग। बिकॉज ये सारे केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो डिग्रेड तो होंगे नहीं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं, इन कॉन्सेंट्रेशंस भी इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट इज अबाउट biological magnification. Next topic is how our activities, human activities affect the environment. उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। देखते हैं ओजोन लेयर बनती कैसे है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। जब
हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की पड़ती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम जो बना है दैट इज हाईली अनस्टेबल। ये रिएक्ट करे बिना नहीं रह सकता, इट कैनॉट रिमेन अलोन। तो ये ऑक्सीजन एटम जो फॉर्म हुआ है वो किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है एंड दैट फॉर्म्स ओजोन, दैट इज O3। तो that is how ozone is formed. This ozone is formed in the higher levels of atmosphere only. It is present in the higher levels of atmosphere only and it's very good for us क्योंकि ये एक deadly poison है। ओजोन अगर हम इनहेल करेंगे तो दैट इज अ पॉइजनस गैस, बट सिंस इट इज देयर एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली वी आर सेफ फ्रॉम इट। बट ये हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है क्योंकि ओजोन सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक नहीं आने देती, उन्हें वहीं पर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सन की अर्थ तक आती हैं तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, especially they cause skin diseases and skin cancer also. So it's very important that a thick layer of ozone is there in the higher levels of atmosphere. ये ओजोन लेयर डैमेज कौन कर रहा है? इट्स रियली अ बिग कंसर्न फॉर अस क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। शायद आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा कि ओजोन में होल आ रहा है, दैट इज गेटिंग डिप्लीटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीजंस। One of the main reason for the depletion of ozone layer is the use of CFC, chlorofluorocarbon। CFC chemicals होते हैं और ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एयर कंडीशनर्स में, so that were widely used in these all and that damaged the ozone layer a lot. So in 1987 United Nations Environment Program, UNEP, remember this full form, it's very important for as a 1 marks question that what is UNEP। so United Nations Environment Program ने decide किया कि इसके use को ban करना पड़ेगा। so the use of CFC was banned and nowadays the refrigerators and the air conditioners that are manufactured that shouldn't use any CFC. So this step was taken to protect our ozone layer. So that's all about ozone. Next we'll talk about the garbage. Garbage जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नाम से ही पता चल रहा है दैट इट कुड बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द न्यूट्रिएंट्स कैन गो बैक टू द सॉइल। तो ऐसे वेस्ट को हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, all the dead bodies, so all that is included in the biodegradable waste, all the vegetable peels and all that are all biodegradable, that could be decomposed by microorganisms. The non-biodegradable waste are the waste that couldn't be degraded or couldn't be decomposed by microorganisms like plastic, metal waste। ये सब increase होते जाएंगे, एक बार ये form हो गए तो that would not be decomposed by any microorganisms। अब देखते हैं the effects caused by these waste on our environment. So first talking about biodegradable waste. Biodegradable waste का क्या क्या नुकसान हो सकता है? That becomes a breeding ground for many microorganisms, mosquitoes, flies, ये सब उस पे grow करेंगे। Even the microorganisms will increase in number wherever biodegradable waste is dumped. और उसकी वजह से they become a breeding ground for these insects and microorganisms and help in the spread of diseases। तो diseases के spread होने का एक main कारण बन सकते हैं ये biodegradable waste। Second drawback or second effect of these biodegradable waste is that they produce foul smell। तो गंदी स्मेल भी आएगी जहां पर भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। सो इफ इट इज देयर अराउंड योर हाउस यू कैन जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, यू डोंट वांट एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अराउंड योर हाउस स्पेशली। Next, talk about the non-biodegradable waste, the effects of non-biodegradable waste on our environment. So, non-biodegradable waste cannot be decomposed by microorganisms, and so the quantity of these waste will keep on increasing only. Every day we are using a lot of plastic, and all that plastic is non-biodegradable. तो उसकी quantity earth पे बढ़ती ही जा रही है, and it causes water pollution, soil pollution, as well as अगर आप उसको burn करते हो तो that would cause air pollution also. So non-biodegradable waste can produce a lot of pollution.
Second drawback of that is it's non-biodegradable, तो इसकी quantity बढ़ती ही जाएगी, and if it is consumed by any of the organisms, like sometimes the cow consume this biodegradable waste, when you throw the waste along with the polythene bags, तो वो organisms कई बार इस polythenes को खा लेते हैं, they go into that stomach of these organisms and then it harms them a lot. In fact, ocean में ये polythenes जा रही हैं, ये plastic waste जा रहा है, and that is harming the aquatic organisms also a lot. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका एक एग्जांपल हमारे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स भी हैं, और हमने देखा था दैट दे कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये फूड चेन में एक बार एंटर हो जाते हैं तो फिर डिकम्पोज ना होने की वजह से फूड चेन में आगे बढ़ते रहते हैं, एंड एज वी गो हायर अप इन द ट्रॉफिक लेवल द बॉडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इसका एक ड्रॉबैक है ऑफ दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब देखते हैं हमें मैनेज कैसे करना चाहिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है उसका कंपोस्टिंग या मैन्योर बना दिया जाए. सो इफ मैन्योर बनाया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का या बायोगैस प्लांट्स में यूज करा जाता है तो दैट विल टर्न इनटू द न्यूट्रिएंट्स एंड दैट न्यूट्रिएंट्स विल गो बैक टू द soil and that will be very very helpful to increase the soil fertility also. Now next see that what should be the management, what should we do for with the non biodegradable waste. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हमें यूज करना चाहिए 3R, that is reuse, reduce and recycle. So we should reduce the use of any of the non biodegradable waste like plastic. Second thing is that reuse. रीयूज बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत पुरानी टाइम से हम फॉलो करते आते हैं. जैम की एम्प्टी बॉटल्स में स्पाइसेस को फिल करके रखना, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रीयूज. एंड लास्ट थिंग इज रिसाइकलिंग. तो न्यूज़पेपर्स हैं, पॉलिथीन बैग्स हैं, मिल्क के एम्प्टी पाउचेस हैं, दे ऑल शुड बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग, क्योंकि रिसाइकलेबल होते हैं ये, तो ये वेस्ट के फॉर्म में इंक्रीज नहीं होंगे अर्थ पे, एंड दैट कुड बी रिसाइकल्ड इन फैक्ट्रीज. So that's a good idea to send all the metal waste, plastic waste as well as paper waste again for recycling. Now the next and the last topic is the waste collected in the trains. Trains में सबसे ज़्यादा waste create होता है with the serving of the tea. पहले टी को सर्व करने के लिए कांच के ग्लास यूज होते थे, बट दैट क्रिएटेड अ हाइजीन प्रॉब्लम बिकॉज दैट वर नॉट वेरी वेल वॉश्ड. प्रॉपरली अगर वॉश नहीं है तो दैट कैन स्प्रेड डिजीजेस. तो हाइजीन की प्रॉब्लम की वजह से दैट वर नॉट रिगार्डेड गुड एंड वो यूज करना हमने बंद कर दिया. देन केम द प्लास्टिक कप्स. प्लास्टिक कप्स यूज करने के साथ साथ में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड इट बिकेम अलार्मिंग. देन केम द यूज ऑफ कुल्लर, दैट इज द क्ले पॉट्स. क्ले के कप्स जो यूज होते हैं, that sounds to be amazing and that sounds to be like harmless, कि ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बायोडिग्रेडेबल भी है, एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेगा, तो ये अच्छा ऑप्शन है. ऐसा हमें लगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट. इतना सारा क्ले पॉट्स बनाने के लिए टॉप सॉइल को यूज कर लिया गया. जब आप क्ले पॉट्स बनाते हो तो उसके लिए आप टॉप सॉइल यूज करते हो, एंड आपको पता है टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. तो बहुत ज्यादा क्ले पॉट्स का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई, जिसके लिए टॉप सॉइल यूज हो गया, और जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, एंड सो इट अगेन बिकेम अ मैटर ऑफ कंसर्न. और इसलिए आज हम यूज करते हैं पेपर कप्स, बट उसकी भी अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं. बट अल्टीमेटली टुडे वी आर यूजिंग द पेपर कप्स फॉर सर्विंग द टी इन ट्रेन्स. So the best option is घर से कप लेकर जाओ या चाय पीना बंद करो. Don't have a lot of tea in the trains also. Okay. So by that we have completed with our chapter. It was a very small yet interesting and important chapter for your exams, because this chapter can also give you 5 marks. So prepare this chapter also very well so that you don't miss even a single marks out of that. So that's all for this video. If you like the content, do share it with your friends as well and help me to spread knowledge. Take care of yourself. Good day everyone.